everyone. Today we will discuss air spotting exercises. इन exercises को हम objective questions के through देखेंगे and it is definite that it will help you in your examination. So let us start. The first question is, first of all, see the direction. In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error. हमें फाइंड करना है कि ये जो सेंटेंस दिया है इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए गए हैं. हमको फाइंड करना है दैट किस पार्ट में एरर है एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चूज करना है. इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर, विच इज ऑप्शन नंबर डी. Okay, let us start. Question is, he cooked dinner and then turned the radio on. He cooked dinner and then turned the radio on. Okay, the spelling of then is not correct. The spelling would be en. Then it is used when you are saying comparative degree. तो हम लोग then THAN then का यूज कब करते हैं? कंपैरिजन में करते हैं, comparative degree में करते हैं. So let us discuss explanation first. In the above given sentence, the error is part C. Okay, it is so because then has been wrongly used in the place of then. Why so? Because then is used for comparison. Then का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? Comparison के लिए करते हैं. जैसे more than, faster than, she is younger than. तो ये comparison हो रहा है दो लोगों के बीच में. That's why हम लोग क्या करते हैं? Then का यूज हम लोग हमेशा comparison के लिए करते हैं. Then is used to represent time in the given context afterwards. For example, look at this. She said something and then rode ahead. This one is the example THEN written spelling. Let us see the question again. So option number C हमारा according to explanation सही होगा because the spelling of then is not correct. The spelling of then would be THEN. Let us see another example. An apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. It is, I don't think it has any error. Let us see the explanation first. The correct answer is option number D. There is no error in the sentence. कोई error नहीं है. The sentence is well-known phrase. हम लोग के पास हमेशा से use हुआ हुआ ये phrase है. That means eating an apple every day can help prevent getting sick. So you won't have to see a doctor as often. Thus, option number 1 is correct answer. It means we got the answer, which is option number 1. This sentence has no error. Let us discuss another question. The political economy of reforms teaches us one major lesson loud and clear. First of all, see that कि पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें पार्ट वाइज किया हुआ था, बट ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है. एंड हियर यू हैव गिवन सम ऑप्शंस. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग इन पार्ट्स में से क्या करेंगे? ऑप्शंस को खोजेंगे कि किस पार्ट में हमारा एरर है. लेट अस सी अगेन द सेंटेंस. द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स टीचेस अस वन मेजर लेसन loud and clear. Said this one is and loud and clear means this one is in positive, but this one is in comparative. And you are saying that अगर हम positive use कर रहे हैं then we have to use the positive degree here also. And if you are using comparative degree then both the degrees should be in comparative. Let us see the explanation. The error is in part 2. Listen loud and clear. In English, we don't usually combine the comparative degree form and adjective clearer with the absolute form of loud. Why it is? Because हमको एक जैसा ही दोनों के दोनों डिग्री रखने होते हैं. Instead, we would use the comparative form for both adjectives or the absolute form of for both. दोनों के लिए हम लोगों को क्या करना होता है? Similar form use करना होता है. The idiomatic expression in English is loud and clear. अगर आपने रखना है तो दोनों के दोनों को एक ही डिग्री में रखना है. That is loud and clear, meaning unambiguously clear or unmistakable. Therefore, the correct sentence is the political economy of reforms teaches us one major lesson loud and clear. So, let us discuss the sentence. Which part is in error?
Yes, we can say that loud and clear. Option number 2 is the correct answer. Let us discuss another sentence. Had you not raised in time, we will have lost our lives. So the options are: had you lost our lives, not raised in time, we will have. Look at here. This is in past form and this is in future form. तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और ये क्लाउज चेंज हुआ है यहाँ कॉमा के साथ, तो फिर हम यहाँ फ्यूचर कैसे डाल सकते हैं? इट मस्ट बी एरर इन दिस phrase. Let us see the explanation. In the given sentence, the use of simple future tense we will have incorrect. ये will have जो है ये incorrect आ रहा है. The given sentence in third conditional sentence explaining that present circumstances would be different if something different had happened in the past. मतलब अभी का जो circumstances है वो कुछ और होता अगर past में कोई एक घटना घटित हो गया रहता तो. ठीक है, ये तो हम लोगों ने सेंटेंस को समझ लिया. बट what about the error? The third conditional sentence format, past perfect, model auxiliary, means if you have would, could, should, etc. plus have plus participle. अगर conditional sentence में ये सारी चीजें होते हैं तो when using the third conditional, we use the past perfect, which is had plus past participle. In the if, अगर if के साथ होता है मीन्स कि अगर if क्लाउज के साथ होता है देन यू हैव टू यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. बट मॉडल एक्सिलरी अगर हमारे सेंटेंस में होता है तो हम लोगों को फ्यूचर नहीं रख के उसको क्या करना होता है? वुड, कुड या फिर शुड एक्सेट्रा में हम लोगों को पास्ट टेंस में डालना होता है. मीन्स वी हैव टू यूज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन द मेन क्लाउज. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी हैड यू नॉट रेज्ड इन टाइम वी वुड have lost our lives. Let us see the sentence again. तो इसमें आपका एरर हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा that it is in past, so we have to use this phrase in past also. Means it would be we would have. Okay, हम लोग इस तरह से इसको फ्यूचर में हम इसको नहीं रख सकते हैं. So the option 4 is the error. Next sentence, Rahul sings very sweet. Sweet is the error here. Why it is? Because sweet is an adjective. Sweet क्या है? Adjective है. And हम लोगों को यहाँ क्या यूज करना है? अगर adjective है तो ये राहुल को क्वालिफाई कर देगा, है ना? बट हमको यहाँ किसको क्वालिफाई कराना है? Sings को. Very sweet. गाने के लिए बोलना है कि वो बढ़िया गा रहा है या मीठा गा रहा है, तो हम लोग को यहाँ sweet यूज नहीं करना है. We have to use ly, sweetly, है ना? तो error must be in the yes, option number 1, very sweet. Let us see the explanation. Here, sweet is an adjective which qualifies a subject, which is noun or a pronoun. However, an adjective is required to modify a verb. जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अभी adjective हम लोग नहीं चाहिए, adverb हम लोगों को चाहिए था. Example, Philip sings loudly in the shower. Okay, loudly. The adjective with ly means it is an adverb which is qualifying a verb. Thus, sweet will be replaced by sweetly. Sweet को हम लोग sweetly के साथ replace कर देंगे. ly we have to use ly. So the correct sentence would be Rahul sings very sweetly when he is in a good mood. Sweetly. Okay. Let us see the another example. I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited. I don't think there is any error in the sentence. No, I think it is no error. Option number D is correct. Let us see the explanation first. The given sentence has no error. Okay, the sentence is in the past tense, so we use the past tense form of the verbs, that is shocked and aged. जो sentence हमारा दिया है वो past tense में है, so we have used shocked and the yes aged here. Again, since has been used to refer to a point of time. Since का use किस लिए किया गया है? एक point को refer करने के लिए. Let us see the sentence again. Since यहाँ दिखाया है. Okay, see the clause here. Grandmother had aged means this clause is in past perfect. You can say had plus V3. If you are using had plus V3, okay. But in some circumstances we can use since 4.
वी कैन ऑल्सो यूज सिंस प्लस फोर, हम लोग सिंस और फोर का भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एरर इज इन, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, कंफ्यूजन पॉइंट्स इन द सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत बड़ा था, ठीक है, तो सभी को लगेगा कि इसमें एज एरर हो सकता है, या यहाँ पे आई क्यों है, आई की जगह वी होना चाहिए। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन कंफ्यूजन पॉइंट। There might be confusion regarding why we is used in the part of the sentence and not I, है ना? Both we and I are correct. दोनों के दोनों, we भी लग सकता है यहाँ और I भी लग सकता है. So there is nothing to take more issue on that. The speaker is talking about his or her own feeling. Okay, so he was shocked when the last time he she visited. So it was the explanation. It can be that the speaker went along with a group of family. Means if the sentence is carrying we, means he is saying that a group of family members, and hence we is referred very correctly. Also the uses of aged. Look at this. Is used correctly. We do not have to use many. I was shocked to see हाउ मेनी माई, हाउ मेनी यहाँ मदर को क्वेलिफाई करने लगेगा, एज को क्वेलिफाई नहीं करेगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज करना है, मछी, जो कि वहां किया है। और सिंस क्या यूज, सिंस क्यों यूज हुआ है, जो ताकि हम ये पॉइंट को दिखा सके पास्ट में किसी एक पॉइंट को इंडिकेट कर सके। सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। Let us see. Each of the survivors of the tsunami have been offered free psychological consultation to ease the trauma by some of the top consultants. Look at this. Have. Have is the error here. Why? Here H, the determiner H is using. अगर जब भी हमारे किसी सेंटेंस में H, every, either, neither अगर यूज होता है, तो हमारा जो वर्ब होता है ऑलवेज लाई इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा ही ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो ये तो वेरी सिंपल, इट वाज वेरी सिंपल। सो द एरर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लुक एट द एक्सप्लेनेशन। वी नीड टू चेंज हैव इनटू हैज because each is always followed by the singular verb. Not only each, the all four determiners I have written, each, every, either, neither, always followed by the singular verb. Each plus of the plus plural noun plus singular verb. Okay. Thus the correct sentence is each of the survivors of the tsunami has been, है ना? अगर ऐसा होता है, ओके, इस रूल के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि each of the के बाद भी क्या होता है, प्लूरल नाउन यूज होता है। मीन्स अगर होता each of the boys is are present, वैसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बिकम डायलेमेटिक, हम लोग डायलेमेटिक हो जाते हैं नाउन को देख के दैट इट इज प्लूरल। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इफ यू हैव ईच, एवरी, ईदर, नीदर, द फोर डिटरमिनर इन द सेंटेंस, यू हैव टू यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज द फॉर्मूला। अगर ईच ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन है, then you have to use the singular verb. Why it is? Because each is used in the sentence. So the correct answer would be, the correct sentence would be each of the survivors of the tsunami has been offered free psychological consultation to ease the trauma by some of the top consultants. Let us discuss another question. Encouraging healthy competition between the students of the school was one of the objectives of the annual sports day. Okay, students में हो रहा है, means between आपका क्या है, it is an error. जो competition हो रहा है, it is among the student. हम लोगों का जब if you are comparison, if you are comparing two people, then you have to use between. And if you are using if you are comparing among the group, अगर ग्रुप में हम लोग किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, then we have to use among. So option number Q is the correct answer. Let us see the explanation. In the above given sentence, between will be replaced by among, है ना? Among का use करना है. Between can be used for any number of elements as long as the elements are separate or distinct. Okay. For example, negotiations between the member states
collapsed last night. Among is used when talking about people or things. मीन्स कि अगर हम लोग ग्रुप ऑफ पीपुल के साथ यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स के साथ यूज करते हैं, तो हमने क्या करना है, among का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज नॉट मच यूनिटी among द काउंसिल मेंबर्स, है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपुल यहाँ दिख रहा है आराम से. Thus the correct sentence is encouraging healthy competition among the students of the school was one of the objectives of the annual sports day. Let us see the another question. The government employees went doors to doors. Yes, in a village to fetch some data. Let us discuss. ये doors to doors जो phrase है, ये हम लोगों का हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होना है. Why it is? Let us see the explanation first. If a preposition comes after a noun, अगर preposition आता है noun के बाद and the same noun gets repeated और वापस से वो noun repeat हो जाता है. Let us see the example. Search after search. Look at the noun here and there is a preposition after noun. Noun के बाद यूज हुआ हुआ एक preposition है. If it happens, अगर ऐसा होता है that noun plus preposition plus noun, then what is going to happen? ये हमारा प्लूरल में नाउन नहीं होना है. नाउन हमारा किस में होना है, सिंगुलर में होना है. तो लुक एट द सेंटेंस अगेन. तो यहाँ पे एरर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. लेट अस सी अनदर क्वेश्चन. As soon as I reach to my house, I will send you the driver. Okay, reach is the verb here. To my house. The reflection of reach, the reflection of verb directly lies on my house. It means my house is a direct object. You can see direct object. तो अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. हाँ, हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ वी डोंट नीड टू यूज प्रीपोजिशन. टू का यूज हम लोग नहीं करेंगे. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू द रूल, reach is a transitive verb, okay, which has direct object. Hence, after a transitive verb, will need to write a direct object. ठीक है, तो ये direct object लिखना होता है. So we will remove the preposition to after the verb reach. Reach के बाद जो preposition आया हुआ है, which is to, इसको हम लोग को क्या करना होगा, वहां से खत्म करना होगा, क्योंकि ये exaggerate कर रहा है. Why it is? क्योंकि हम लोग जब भी एक ट्रांजिटिव वर्ब अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैरी किया हुआ है तो हम लोग उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई. लेट अस सी द सेंटेंस अगेन. यहां आई रीच टू नहीं होना है, टू इज द एरर. सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. अनदर क्वेश्चन. 100 रुपीज वर द अमाउंट सी वॉन. 100 रुपए का जो अमाउंट था वो उसने जीता. ओके, व्हाट इज द एरर हियर? व्हाई इट इज? बिकॉज 100 रुपीज, ये प्लूरल तो दिख रहा है लेकिन ये होलसम प्राइस है ना. दैट्स व्हाई. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट. द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस वुड बी पार्ट 1. ओके, व्हेन अ प्लूरल नाउन एक्सप्लेन्स ए स्पेसिफिक अमाउंट, अगर स्पेसिफिक अमाउंट शो कर रहा है, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. वर्ब कैसा होना है उस समय, सिंगुलर होना है. अगेन, अगर एक नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है और वो स्पेसिफिक अमाउंट को शो कर रहा है, मीन्स वो प्लूरल होते हुए भी वो सिंगुलर बन रहा है, देन वी हैव टू यूज द सिंगुलर वर्ब. द करेक्ट रिप्लेसमेंट शुड बी वाज. सो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी 100 रुपीज वाज द अमाउंट, है ना, 100 रुपए अमाउंट था. सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1. इट हैज एरर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. Another question. It was the very well directed film and we enjoyed it. So let us see it. क्या होना है यहाँ? फिल्म क्या है? एक फिल्म क्या है? कॉमन नाउन है. फिल्म एक कॉमन नाउन है एंड देयर इज नथिंग विच इज गेटिंग इट पार्टिकुलराइज. फिल्म को पार्टिकुलर करने वाला कोई ऐसा नाउन भी इधर या कोई ऐसा वर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. डायरेक्टेड, वेल, इट इज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव्स. ये एडजेक्टिव्स हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे जो वेरी जो आ रहा है ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. दैट्स व्हाई ये एडवर्ब है. ठीक है, तो यहाँ द क्या हो रहा है? गलत हो रहा है. वी हैव टू यूज, यहाँ पे क्या यूज करना है? ए का यूज यहाँ पे होना है बिकॉज देयर इज ए कॉमन नाउन. फिल्म इज ए कॉमन नाउन हियर. सो द एरर इज इन
Option number three. Option number three is the correct answer. Let us see the explanation. Here, a very well directed film should be used instead of the very well directed film. A very well होना चाहिए the की जगह पे. Why it is? The rule of the use is an और a is. हम लोग an और a का use जानते हैं. Common noun के साथ जो use हम लोग का होता है, that if the word following has the vowel sound, we have to use an. अगर consonant sound है, then we have to use a. There are many examples of relation to very. Example, let us see another example. That was a very nice house. यहाँ a क्या है? तुम्हारा very के लिए आया है, which is written here. So another thing, another example. Let us see. So another question is, we stayed in Jim's flat during he was on the holiday. Okay, the use of during. We know the use of during. यूज ऑफ ड्यूरिंग, हम लोग जो ड्यूरिंग का यूज करते हैं वो या तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं ड्यूरिंग का. बट अगर हमको बीच में ऐसा कनेक्टर को डालना ही है, देन वी हैव टू यूज व्हेन. हम लोगों को व्हेन का यूज करना होता है. सो ड्यूरिंग इज द एरर. सो दिस पार्ट इज एन एरर. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन. This will be your last question. Here, when he was should be used instead of during. He was. When he was use होना था, when को use करना था instead of during. Use when plus sentence, so we need a subject and a verb. We can use this at the beginning or at the middle of the sentence. Example, she is quiet when she is angry. क्या हो रहा है? When का हम लोग यूज कर सकते हैं. When का यूज करेंगे कहां पे? At the beginning of the sentence or at the middle of the sentence. Okay, but whereas during का जो हम लोग during plus noun का यूज करते हैं वो कहां यूज करते हैं? At the beginning of the sentence और at the end of the sentence. हम लोग या तो इसको beginning में यूज करते हैं या फिर एंड में यूज करते हैं. सच एज द क्राइड ड्यूरिंग द मूवी. यहां देखो इस फ्रेज में ये लास्ट में आ रहा है, तो हम लोग ड्यूरिंग का यूज हमने यहाँ पे किया है. शी क्राइड व्हेन द मूवी, नहीं, शी क्राइड ड्यूरिंग द मूवी. सो अगेन रिटर्निंग टू द सेंटेंस, विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग नहीं होना है, यहाँ व्हेन होना है.